Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter number 13. Chapter is pollution of air, water. It is science 8th standard. And in this chapter I will discuss today topic about air pollution and its इफ़ेक्ट्स, इसके क्या नुकसानात असरात है। तो आज हम यही टॉपिक ले रहे हैं, एयर पोल्यूशन। आपको पता है, आप लोगों को पता है, जो हमारा एयर है इट इज एबायोटिक फैक्टर, इट इज एबायोटिक, हम कहेंगे कंपोनेंट ऑफ, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में ये एक नॉन लिविंग कंपोनेंट है। अगर हम बात कर लेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल एयर होता है इन द एटमॉस्फेयर, उसका अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात हम कर लेंगे, मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन N2 गैस। कितना बाय परसेंटेज, बाय वॉल्यूम कितना एटमॉस्फेयर में, दैट इज 71% बाय, दैट इज सॉरी इट इज 78% बाय वॉल्यूम। एंड नंबर सेकंड पे आता है ऑक्सीजन, जो O2 गैस कहलाता है, ये 21% हवा में होता है। और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हम कर लेंगे, इसका परसेंटेज 0.03%। और इसी तरह से आर्गन नोबल गैस इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, आर्गन भी लगभग 0.00 कुछ 4% में पाया जाता है। देन कम्स द अदर gases also comes in, other gases also include the water vapor। ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो हमारा एयर है, it is chemical composition is नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, अदर gases इसमें होते हैं। तो अब ये हवा जब ये नॉर्मल कंसंट्रेशन में पाया जाता है, it is in our atmosphere in normal concentration, that is percentage by volume। जब भी कोई एयर पोल्यूटेंट चला जाता है, एयर गैसेस पोल्यूटेंट चला जाता है इस एटमॉस्फेयर में, it changes the normal proportion in the atmosphere। result what consequences are, what result are, क्या नतीजे निकलते हैं, मतलब पोल्यूशन टेक प्लेस। जब इनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा परसेंटेज पाया जाता है इन द एटमॉस्फेयर, तो ये अब ये इसके नुकसानात होते हैं। इसके नुकसान है to the living organisms, to the non-living organisms, that means also plants, animals, soil, water and buildings, other constructions are affected by these air pollutants। मतलब अब हम यहाँ बताएंगे कि जो एयर है, चैप्टर का नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, हाउ पोल्यूशन टेक प्लेस इन एयर एंड हाउ पोल्यूशन टेक प्लेस इन वाटर। it includes in term second syllabus। Now we move at how you define air pollution। एयर पोल्यूशन को किस तरह हम डिफाइन कर लेंगे? any substance, हम कहेंगे any substances that alter means to change, that alter chemical nature of, chemical यही कहेंगे हम केमिकल। अभी मैंने बताया, तभी तो पहले मैंने बताया व्हाट इज द कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ आवर एयर एंड एज पर द नॉर्मल कंसंट्रेशन, कितना गैसेस मटेरियल कितना प्रपोर्शन में होता है। एनी सब्सटेंस दैट अल्टर chemical composition of
normal air in the atmosphere that affects natural living and non-living दोनों चीजें अफेक्ट और नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होता है, किस तरह मैंने एयर पोल्यूशन को डिफाइन किया। यहाँ एयर पोल्यूशन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस, खासतौर गैसियस सब्सटेंस और सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो ऑल्टर करता, ऑल्टर मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय हियर ऑल्टर, शाबाश, टू bring a change, that alter chemical composition of normal air। जो नॉर्मल एयर अभी मैंने वो बनाया, यहाँ पे बहुत सारे वहाँ गैसेस मेंशन किए हैं, अगर उनमें बदलाव आया, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज रही, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आज इन दिनों ज्यादा मात्रा में जमा हो रहा है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में, नाइट्रोजन ऑक्साइड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द एटमॉस्फेयर इन हाई इन कंसंट्रेशन, जिसके वजह से मतलब there is some consequences, what consequences of pollution take place, that means which alter chemical composition of normal air in the atmosphere में जो normal air composition होता है उसमें बदलाव आई, और automatically there could be that affects, एक तो नेचुरल लिविंग पे इफेक्ट होता है, दैट एनिमल्स, प्लांट्स, that and non-living things are also affected. This is known as the air pollution. Now air जो अब यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है, सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो addition of gaseous substance and suspended particulate matter into the air leads to एयर पोल्यूशन। इस तरीके से भी आप एयर पोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हो। क्या होता है, जब भी कोई गैसियस सब्सटेंस या कोई सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, क्या होते हैं, आपने देखा होगा डस्ट, सूट, कार्बन पार्टिकल्स, दे रिमेन्स इन द एयर इन द सस्पेंडेड फॉर्म, दे नॉट सेटल डाउन, वो नीचे नहीं आ रहे, वो हवा में घूमते रहते हैं, दे स्टार्ट टू फ्लो, they start to floating in the atmosphere and there is impossibility to settle down। वो तभी settle हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं अर्थ सरफेस पे, नीचे आ जाते जब when there is a wet deposition, that means rainfall take place, snow take place or dews take place, that means with that they comes down, उसमें लोडिंग प्रोसेस होती है, तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, आप देखो जब भी बारिश पड़ती है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर होता है, वो साफ होता है, और बिल्कुल देयर इंक्रीज द विजिबिलिटी, बिल्कुल साफ साफ नज़र दिखाई देता है। क्योंकि इससे पहले क्या होता है, जो स्मोक होता है, धुंधला होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो सूट पार्टिकल्स होते हैं, वो लोडिंग के जरिए नीचे आ रहे हैं। अब ये हमारा एटमॉस्फेयर क्लियर होने, जिस तरह आप घर के शीशे साफ करते हो, उसमें जो डस्ट धूल लगी होती हो तो आप बिल्कुल उसको विप आउट करते हो तो बिल्कुल वो शीशा क्लियर दिखता है। इसी तरह after raining our atmosphere starts, after raining our atmosphere looks like a clear glass, साफ दिखता है, एंड मतलब हमें दिखता है कि देयर इज अ क्लियर ऑब्जेक्ट्स और सीइंग clear, there is a clear objects, now we can see the object clearly। यहाँ पे देखो, यहाँ जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, गैसेस मैटर, वो चला जाता है हवा में, तो दैट कॉजेस एटमॉस्फेयर पोल्यूशन। यू टॉक अबाउट द गैसेस मैटर की बात आई यहाँ पे, आई मीन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आई मीन द कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx,
अब यहाँ पे मैंने x क्यों, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, NO3, तो x can be 1, 2, 3 or 4 in number. Here here can be the sulfur dioxide in the atmosphere. These are the gases, particulate matters which leads into the atmosphere here. These gases, या मीथेन गैस भी हो सकता है, या यहाँ पे आप गैसेस बात मीथेन, CH4 is known as the methane. Other gases matter I talk about their CFCs, chlorofluorocarbons. क्लोरो इसका मतलब है fluorocarbons. What are these carbons? These are the organic compounds which is responsible to cause the ozone layer depletion, which leads to ozone layer depletion later on. The gaseous particle, you talk about the suspended particulate matter as the soot, this ash, fly ash, you talk about the fly ash, ये generate होता है by the fire से generate होता है. You talk about the lead particles, PB, lead. I will tell you here the जो automobile exhaust से निकलता है, lead particles. You talk about the smoke. Okay, these are the particulate matter. You talk about the you take the dust here. These are the particulate matters, which leads to the atmosphere. Now, what are the various sources of the atmospheric pollution? उसके बहुत सारे sources हैं. Some are the movable sources, some are the non-movable sources, some are हम कहेंगे localized sources, non-localized sources. Now, जो भी है, I will generally tell you that sources of air pollution. Sources, इसके क्या क्या sources रहते हैं? You know that we have a demand of goods, industries and factories. They leads to the air pollution. This is the sources. जो waste material burn होता है as the source of energy that lead out, that exhaust out the smoke through their chimneys. Here industries, factories that are running, वहाँ पे मटेरियल जो बर्न होता है उसमें वहाँ पे lot of smoke is exhausting out by these sources, factories, industries जहाँ पे goods बनाते हैं. Automobiles, these are the movable sources of air pollution. Automobiles exhaust जो ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट में जो वहां से निकलता है धुआं, heavy particles, heavy metal particles जो उसके एग्जॉस्ट से निकलते हैं. Third is the open, we can say open burning. कभी कभार हम अपने सहन में, अपने लॉन में, अपने गार्डन में, अपने बाग बगीचे में we start to burn the this is a rural areas practice, the burning of the straw, human animal excreta, grass, burning of the wood, burning of the leaves, tree leaves. During the autumn seasons there is a high proportion of open burning of the leaves. We should avoid. Here it is it has been recently published in the paper that it contributes much more air pollution, open burning. And that fourth one is here the I will mention here the fourth one, fossil fuel burning, fossil fuel combustion. They also lead us to the air pollution. Fifth one is the oil refineries जहाँ पे जो मिट्टी का तेल बनता है, पेट्रोल डीजल, जहाँ इसकी सफाई होती है, रिफाइनरीज, वहाँ पे भी आप जो इससे भी कंट्रीब्यूट होता है एयर पोल्यूशन. दीज आर द वेरियस, या हम कहेंगे देयर आर द सम natural sources that are the forest fire. This is the natural, it could be man-made or the natural
forest fire. Sixth, seventh one is the here dear students. Volcanic eruption. Volcanic eruption. It also leads to. So these are the here are the various sources of air pollution with the help of our air, which is not fit to breathe, and it affect due to the air pollution. Major respiratory system is affect our in if we talk about the human respiratory system is affected. खास तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन. these are the various sources of the air pollution. Now here I will show here that when you burn some when we burn मतलब what are the various effects, क्या हो सकते असरात क्या क्या पाए जाते हैं हम effects on the component of जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है कैसे उनमें असरात आते हैं. चाहे हम बात कर लेंगे एनवायरनमेंट की लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में किस तरह there is the effects. You know that when we burn fossil fuels, burning of fossil fuels, number one, burning of fossil fuels leads to the generation of carbon dioxide gas, carbon monoxide gas, sulfur dioxide gas. When these gases releases into the atmosphere and they start to accumulate in the atmosphere, then they start to, when these vapors say the sulfur dioxide gas, then it reacts with shabash, it reacts with water vapors in the atmosphere, it reacts with the water vapor, then there is a formation of H2SO4. What is this? sulfuric acid. और इसी तरह से कभी कभार जो कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन, ये कहाँ से गैसेस आए? दीज आर द गैसेस पोल्यूटेंट्स बाय बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. इट reacts this carbon dioxide reacts with the water vapors in the atmosphere. Then there is a formation of carbonic acid, H2CO3. This is a carbonic acid. When in the atmosphere there is carbonic acid and there is sulfuric acid in the atmosphere, during the raining, when there take place rain, जब भी बारिश पड़ती है, when there take place rain के कारण क्या होता है, जब ये बने एटमॉस्फेयर में, ये बने that when there is a rainfall, then with the rain there is acid. This rain with these rainfall, or then it is called acidic rainfall. Then acidic rainfall affects the living component, that is plants, agriculture, plants, animals, plus they affect also non-living. That in what way they affect the non-living? As water becomes acidic. Water जो होता है वो acidic होता है, acidic बनता है, acidic. Water becomes acidic. Number one. Number two, जो marble composite monuments होते हैं, monuments which are made up of the marbles, they are degraded. Marble composite monuments. Those monuments, marble containing monuments, they are degraded. They are degraded. वो खराब हो जाते हैं वो क्योंकि आपको पता है कि मार्बल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट. जब भी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ रिएक्ट होता है, then there is a formation of water, carbon dioxide. Then here we can say the marble is degraded. Marble क्या होता है? वो खराब हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाता है.
Acid rain take place when there is a excessive use of fossil fuels in the the fossil fuels are extensively used in the thermal power plants in other factories industries, and as it is less expensive fuel, they could not bear the high expensive fuels. So therefore the owners of the factories industries, they prefer to have a coal as a source of energy. When there is a burning of the coal in their furnaces, in their engines, they start they start the releasing of carbon dioxide, carbon monoxide निकलता है. Carbon monoxide is very poisonous gas. It causes the suffocation in the lungs, as the patient cannot breathe oxygen. एट कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये आरबीसी सेल्स के साथ ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता, जिसके वजह से जो पेशेंट होता है दैट फील द suffocation due to the lack of intaking of the oxygen, and oxygen पूरे बॉडी में नहीं पहुंचता है. that becomes unconscious ideal in condition that here it is a carbon. अब जो भी बर्निंग ऑफ फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से या सल्फर डाइऑक्साइड की बात हम कर लेंगे, जब भी ये निकलते हैं बाय द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज इंडस्ट्री या थर्मल पावर प्लांट से, क्योंकि कोल में भी कुछ मात्रा में नाइट्रोजन सल्फर होता है, फिर ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं. नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे. आज देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड आजकल ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर. अब कोई यही एक वजह नहीं है बाय बर्निंग ऑफ द fossil fuels in the industry. There is also the cause of deforestation, open burning of the levers, wastes, carbon, wood, open burning of the forest because of the forest fire. There is also the releasing of the carbon dioxide gas. Here we can say this is one of the effect acid rain take place. Here one of the gaseous pollutant, because it is a contribution of various gases. You can say also then when there is a release of the smoke, then it combines with the smoke fog. It combines with fog, fog. Then there is a formation of smog. Then smog is very dangerous to the it leads to asthma. It leads to the disease that is asthma, and it leads to the disease cough. And then it wheezing in child leads to wheezing in child. These diseases are in the are insane. That following diseases, these are all the respiratory diseases because of the presence of smoke. When there is a lot of smoke in the atmosphere, in the air, then it combines with the fog. During the winter, there is a smog formation. Smog formation has the ill effect on our respiratory system, asthma. There is the coughing, there is the wheezing in the children. It is seen in children. तो इस तरह का ये भी एक पोल्यूटेंट आइडेंटिफाई कर हम देखो यहाँ से लॉट ऑफ स्मोक इज generating by burning the garbage, agriculture wastes, cow dung, citra, agriculture wood. Lot of smoke is generating by the burning of the open burning of the these wastes, agriculture waste, garbage, which leads then combined with fog during the winters. It leads to the formation of smoke. Due to the smoke, there is also it also causes the eyes irritation, eyes irritation भी होती है इसमें, और it also result in the headache also smoke के कारण. तो dear students, we should care
care about the atmosphere. तो यहाँ हम और बताएंगे जो भी यहाँ पे और भी इसमें है, जो अभी मैंने कहा कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, वहाँ से उनके एग्जॉस्ट से निकलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीजिंग बाय द automobiles. You know this carbon dioxide is as usual known as the greenhouse gas. Greenhouse gas, as its contribution is the 60% in causing the global warming. Global warming. It increases the temperature of the earth. What is global warming? Increasing the temperature. Increasing the temperature of earth. Increasing the temperature of earth का जो तापमान है वो बढ़ता है. And now these days it is a threat because here is the higher accumulation of जो नाइट्रोजन है, it starts at the high accumulation. ये ज्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, and its source is also the automobiles. Also, you know, the nitrogen dioxide, it also causes the respiratory problem here. Respiratory problems also lead to the formation of the acids in atmosphere, which causes then of the acid rain. There is the acid rain. It is also responsible in causing the acid rain, nitrogen dioxide here. Now I will move ahead in here. The formation, you know, here is the compound, one of the compound, that is the CFCs. CFCs are the organic compounds, organic carbon containing compounds, when there is now these days we have banned on the CFCs, organic carbon containing compounds. They lead to the depletion in ozone layer. It has the effect on this ozone layer, depletion in ozone layer. In स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर बनता है वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है by the excessive use of the CFCs, carbon containing organic compound, and it is responsible in causing the degradation of ozone layer. You know that ozone layer is the O3 molecule containing layer in the atmosphere, in the stratosphere. It is in gaseous in form, ozone. In stratosphere, it prevents us. What is the contribution of the ozone layer? That it prevents us by UV radiations, which is very harmful to the living organisms. Therefore, where the CFCs are generating, it is generating by the propellants, rocket propellants. In it is generating sources क्या है इसमें, जो propellants in रॉकेट, जो रॉकेट में प्रोपेलेंट होता है उसमें ही यूज होता है, तो वहां से ही इसकी रिलीज होती है aerosol. When we have an aerosol spray, when there is a spray, aerosol spray, when there is a spraying of aerosol spray से भी वहां से भी निकलता है. And it is also used, now it is not used at all in a रेफ्रिजरेटर्स में भी इस्तेमाल होता है, एंड एयर कंडीशनर्स में. Now it has been banned as it causes the degradation in the ozone layer. Now these they are find an alternative way. हमने alternative way find out किया है. Now these days we have find out the alternative ways in alternative way of the
CFC आजकल ये यूज नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है। देन देयर इज अ कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड नेशंस, देयर शुड बी अ कंप्लीट बैन किया जा सकता है, इस केमिकल को बैन किया जा सकता है। देयर कुड नॉट बी इन यूज इन फ्यूचर, सो दैट there is a problem in the associated with the ozone layers in the atmosphere, then it will in turn indirectly affect the living components of environment. CFC's use of CFC, it is in gaseous in form, then it is accumulation starts in the atmosphere because of the in the CFCs there are carbon CFCs chlorofluorocarbon, there are the chlorine molecules which leads to the breaking down of ozone molecules. Here I will talk about these about अभी मैंने कहा कि जो है कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर suspended particles in the atmosphere. I talk about the dust, you take the smoke, you take the fly ash जो हमें निकलता है, तो क्या है ये इनसे क्या होता है, दे डिक्रीज द विजिबिलिटी, डिक्रीज कम करते हैं जो विजिबिलिटी होती है एटमॉस्फेयर में, डिक्रीज विजिबिलिटी इन एटमॉस्फेयर and also leads to the respiratory, they are inhaled through the air, there is a respiratory, there is also the respiratory problems as the animals and the human beings are affected when there is, ये हमने देखा वहाँ पे dust smoke वहाँ पे which are the industrial areas में ज़्यादा ये चीज निकलते हैं, which decreases the visibility in decreases visibility in the atmosphere, एटमॉस्फेयर में विजिबिलिटी डिक्रीज होती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं वो भी अफेक्ट होता है, देयर इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम and it leads to when it is inhaled, when there is inhalation of these, when there is inhalation of these particles, it leads to the damage, these damage alveoli sac जो रेस्पिरेटरी में होते हैं, alveoli sacs वो डैमेज होते हैं, डैमेज alveoli sac, ये वहाँ इनकी क्या होती है, वहाँ इनकी सेडिमेंट प्रेसिपिटेशन होती है और वॉल्स और अफेक्टेड, जो alveoli sac के जो वॉल्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज जो इनमें होते सैक्स में होते हैं, एल्वियोलाई सैक्स में जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, एंड देयर इज इरिटेशन इन द नेजल चैम्बर बिकॉज ऑफ द डस्ट, देयर इज इरिटेशन इन नेजल म्यूकोसा, दैट इज नेजल चैम्बर में इरिटेशन आती है, देन देयर इज अ sneezing, sore in throat, then there is allergy, respiratory allergy, sore throat, वो हमें गले में हिचकिचा होना because of this problem, and there is coughing, there is sneezing and coughing here also. I will tell you that there is the sore throat, sneezing, allergy, then there is the irritation in the nasal chamber, also there is the अभी मैंने बताया coughing, and also I will include one word in this, that flash के बाद में pollen grains भी इसमें आते हैं, suspended particles में pollen grains भी include होते हैं। वो यहाँ पे ये चीजें मैंने बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस, और it causes the global warming. Global warming is good, convenient, as it has importance. It has importance. It has importance. इसकी importance है क्योंकि ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ जो होता है उसको वार्म रखता है, गर्म रखता है, which is suitable for, suitable किसके लिए suitable है? Suitable for living organisms के लिए ये suitable प्रूव होता है, living organisms के लिए suitable है global. But these days global warming is a challenging threat. It is here the threat. Now it becomes the threat to life when there is threat to life, when there is excess accumulation of, due to the excess accumulation of जमा होना, excess addition या accumulation in atmosphere. जब कार्बन डाइऑक्साइड की excess accumulation हुई अब किसमें? शाबाश, in the atmosphere, then it leads to the greenhouse effect. It leads to the greenhouse effect. Greenhouse. It leads greenhouse effect, as it is the greenhouse gas. Shabash, it leads to greenhouse effect. Then greenhouse effect causes the global warming. Now it warms. Now these days Earth's temperature is warming more and more. Then there is a increasing temperature in the Earth. Then there are various side effects of the global warming, as the glaciers start melting, as the sea level is rising, as the drought areas are become more drought, as they become semi-arid regions becomes the arid. There is a high rate of soil erosion. Then there is a desertification. Desertification means dryness. जो areas dry होते हैं, खुशक, वहाँ already वो खुशक होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा खुशक that those areas becomes much more dry and dry. Then there is a scarcity of water, vegetation reduce, वहाँ vegetation reduction आती है, and decline in the animal number, plant number में decline होती है, कमी होती है plant life में, animal individuals में कमी आ जाती है. Then there is a soil erosion. जब मिट्टी सूखी पड़ गई, घास फूस सूख गया, तो वहाँ जो because of the heavy rainfall any time, heavy wind storm, and the uppermost layer is removed out. That means the global warming is these days very threat, and it is very threat to the life, to the other abiotic components of environment. Soil is degraded. There is a high rate of desertification. So sea level is increasing day to day. Glaciers start melting, and there is the scarcity of fresh water, as the streams, ponds, lakes, flowing rivers, उनमें जो पानी होती है वो कम हो जाता है. जो एनुअल वाटर साइकिल होता है, ईयरली वाटर साइकिल होता है, वो स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. फॉरेस्ट कवर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. एज दैट वन गैस, इसका जो व्हाई आई मेंशन ऑल दिस, देयर आर अदर ग्रीन हाउस गैसेस. It is a greenhouse gas. There are also the other greenhouse gases. I talk about the methane is also a greenhouse gas. Also there is a nitrogen oxides are also greenhouse gas. Number 1, which is number 2, methane, and there is the this is third. Then there is also the water vapors. Water vapors are also the contributor of the greenhouse gases. These are also the contributor of the greenhouse gases. ये अभी मैंने बात की जो CFCs है, yes of course CFCs जो है, CFCs they also CFCs also are the contributor of the greenhouse gases. That means but
Why I focus on the carbon dioxide as the greenhouse gases causes, then later on the greenhouse effect, then global warming. मैंने अभी बताया what are the impacts of the global warming indirectly and directly on the abiotic components of the environment. Here the carbon dioxide, it is contribution in causing as a greenhouse gas, in causing the greenhouse effect. It is contribution is maximum 60% out of the 20. Carbon dioxide is much more responsible. What are the causes of accumulation of carbon dioxide into the atmosphere? Number one is direct is of deforestation. Deforestation is the major cause. Second is the fossil fuel burning, fossil fuels burning. Third is the forest fire. Yes, forest fire, this is the responsible. Fourth one is the we can say open burning. मतलब यहाँ पे क्या है, ज्यादा मैं ध्यान देता हूँ आजकल, तो आप देखोगे कि here is the high rate of decline of the forest cover. There is a deforestation, high rate of deforestation takes place. You know the plants are the major sink of carbon. They are the major utilizers of carbon dioxide. They are the major sink of carbon dioxide gas, as there should be ecological balance of carbon dioxide 0.03% by volume should be maintained in the atmosphere, but it is not so. When we are going to continuously cutting down the trees, plants, decline the forest cover, it is major responsible of utilizer of carbon dioxide. There is an imbalance between the biotic and abiotic cycling of the carbon that leads to a high rate of accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. That after that leads to, as the greenhouse gas causes a greenhouse effect, and there is a accumulation of the solar radiations in the atmosphere. As the carbon dioxide trap the solar radiations, they not allow those radiations to escape into the upper reach atmosphere, then it increases the it increases the earth's temperature. What are the various causes, impacts of what are the various impacts of the global warming? I told you, अभी मैंने verbally तौर पे वो बहुत सारे points बताए कि these days now global warming is a serious threat to life on the surface of the earth. Dear students, it is all about the air pollution and it affects us. What मैंने बहुत सारे air pollutants के बारे में कहा कि उनका कैसे role when they start to add into the atmosphere, what are their impacts and effects on the abiotic and biotic components of environment. किस तरह यहाँ आजकल हमारा air pollution increase होता जा रहा है because of the running of industries, factories, automobiles, when there is heavy mobilization of the traffic, when there is open burning of garbages, agriculture wastes, other organic matters, which leads to the uneven releasing of the pollutants, gaseous pollutants, particulate pollutant into the atmosphere. Now our atmosphere, now our air pays badly. We are directly in contact with our air, with the air, as oxygen is present in the air. We are taking, we are inhaling, we are associated with it, our body is associated with it. It is an important need as we continuously take oxygen, and we should always try our best to be environment pollution free, and there should be high rate of decline of air pollution. We should not generate the pollutions first of all, we should not generate the waste. We should have less demands. We should be economic towards our world, to the world, and we should not be greedy, and there should not be demands for articles, things which are so that to make our life cozy, comfortable. We should go to the sustainable. We should
we should have we should appreciate the sustainable development. Sustainable development क्या होता है? We should judiciously, wisely use the natural resources and take in view of the it should be utilized our future generation in the future. And dear students, I hope you understand about the air pollution, various air pollutants, how they are responsible in causing the various impact towards the air, and then there is the air pollution. Thank you very much.